going to recur every Wednesday at 12 as the first episode goes live today. My name is Vaibhav Jain and I work for a company called Wealthdesk, which has collaborated with Paytm Money and launched WealthBaskets on the Paytm Money app. Many of you would have already noticed that, and I'm hoping that many of you who are in the session would have already transacted one or two WealthBaskets in the past, for the past 1.5 months since we have actually introduced this products. But let me start from the very beginning. There have been many people who would be wondering what these wealth baskets are. But just to take a step back, what I would like to, communicate with you today is as to what your investing journey should be. Leave aside wealth baskets, leave aside, equities, debt, and all. Let's start from the very beginning, right? So this is where we will start building up the momentum. We'll start with how you start with your investing journey. Then we compare different kind of asset classes. Finally, we go on to discussing what are the wealth baskets, and then why should one actually look at this product, and what is in behind the wealth baskets and all those things. So first of all, guys, just starting from the very very beginning, and let me share my screen on this point with you. Uh, Okay, great. I think view the screen. The very very basic philosophy of the investments, risk and reward are directly proportional. Now I know a lot of you guys would be remembering which this scene is from, and this is obviously, this dialogue is not said by Hrithik, but we have used his image in order to communicate this very strong message that risk reward samjhe bina invest karna is not funny. So basically the point is, guys, you need to understand what is your risk appetite, right? There are so many people, and here I am going to kind of talk about a little bit of about personal finance. What I tell many people is that personal finance, by name it says that it's not personal. I mean, it is personal, and it's not a generalized kind of an approach. So a lot of people will tell you, okay, invest here, invest this much x percentage of investment capital in equities, 5% in fixed income. But this is not for everybody, right? For person to person it might differ. And how will you gauge your risk? There are various ways where we can interpret what our risk is, which we will cover in subsequent episode, as to you can at your home, sitting by your side, and obviously talking to people, your near ones and dear ones, then you can basically have a tool where you can gauge your risk profile. If you are able to gauge your risk profile, it will be very very easy to ascribe the different kind of asset classes depending upon what their risk, kind of riskiness of that, those asset classes is, and then you can invest accordingly. So what happens is that if we start from the beginning, the risk of equity asset classes is the one of the highest. It's towards the higher side. And then the riskiness of the debt asset classes like fixed income securities, your FDs, right, your PPFs, which are the traditional investing vehicles, investing instruments, the risk is less. And when the risk is less, the returns are also less. So if you take a little higher risk, your returns will be a little higher. And there you need to find the fine balance as to how much debt you need to take or how much equities you need to invest in. And then there are various other products like gold, and kind of other alternative products like you can talk about REITs and InvITs, which we'll subsequently talk about. But before you start actually thinking about how much percentage to invest in PPF, NPS, your LIC, your insurance, I mean, sorry, your equities and FDs, these are the three basic things which you always need to start with. And if you have not taken these three things, then you need to first, kind of go to the basics, take these three things. And what are these three things? Emergency funds. It is very important in the investment journey for a person to have a good amount of emergency funds. People ask me, Weber, how much emergency funds I should actually take. I have a thumb rule, and this thumb rule is, again, it's a very kind of a back of the envelope kind of a formula. Emergency funds क्या होता है कि पहले मैं बिफोर मार्च 2020 when I used to tell people कि emergency fund होना चाहिए, they used to say कि क्या बकवास कर रहे हो, what emergency fund and all, because किसी ने मार्च 2020 देखा नहीं था कि what happened. Like a lot of people actually lost their jobs. Even when the second wave came in, a lot of people had huge health kind of hospital bills. अभी वो hospital bills का, how these hospitals were charging in lakhs and lakhs of rupees. आपका पूरा savings, पूरा investment जहां भी आपने किया, सब खत्म.
इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस कब आया मार्च 2020 में? दैट अप्रैल, मार्च, मई, जून 2020 लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. अभी जब जॉब बंद हो जाएगी, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, देन हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन योर बेसिक नेसेसिटीज लाइक योर रेंट, योर काइंड ऑफ बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑब्वियसली फूड, राइट? ट्रैवल तो बंद ही हो गया था, तो ट्रैवल पे तो कुछ खर्चा हुआ नहीं. How to gauge what emergency, how much emergency fund you need to have? My basic theory is at least 6 months of your necessary expenses. So वो expenses आपको अपना calculate करना पड़ेगा कि आप हर महीना on an average how much you are spending on the necessity things like a rent and food and groceries and etc etc. Multiply that by 6, and this is the money which you should always have either saved into your, as of now I say savings account में भी पड़ा रहे तो ठीक है, because today savings account and liquid funds are hardly giving, there is not much difference. 3.5-4% दोनों में ही आ रहा है. If you can just kind of tick box this emergency fund, the next thing which comes is the life insurance and the health insurance. By the name you understand what is life insurance, what is health insurance, but again there is some back of the envelope formula that life insurance should be at least 15 to 20 times of your annual CTC. If your CTC is 20 lakhs, then 20 into let's say 50 or 20 into 20, right? So इतना आपका लाइफ इंश्योरेंस, so 3 crores to 4 crores का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास. लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे निटी ग्रिटीज हैं, दैट हु शुड हैव इट, हु शुड नॉट हैव इट. वी कैन कवर दैट लेटर ऑन इन सब्सिक्वेंट एपिसोड्स. एंड देन द लास्ट थिंग इज द हेल्थ इंश्योरेंस. एंड हेल्थ इंश्योरेंस का नेसेसिटी people definitely understood in the last 1.5 years, and I myself understood because my relatives, my mom actually was hospitalized, and then I was so thankful that I know about all these things. And when the bill went in lakhs and lakhs, and I was like, what if I did not have health insurance, so mera to काम हो गया होता अभी, right? So many times you will feel that every year you are paying just premium for life insurance and health insurance, कभी काम नहीं आ रहा है, but जब जरूरत पड़ेगी तब you will realize that it was okay to pay so much of money without getting anything year after year. And now when the need comes, then you will probably understand the importance. So I am hoping and expecting that everybody who is starting their investment journey in any kind of asset classes first tick box all these three things: emergency fund, health insurance and life insurance. Once you are done with that, उसके बाद हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? Let's take few cases. Let's take for a person who has just started his job. सब बोलते हैं ना फर्स्ट सैलरी से आप ये लो, फर्स्ट सैलरी से आप इन्वेस्ट करो, वो करो. मैं कहता हूँ फर्स्ट सैलरी से चिल करो, सेकंड सैलरी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, बट सेकंड से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो. फर्स्ट सैलरी यू हैव लॉट ऑफ योर ड्रीम्स, राइट? अपने पेरेंट्स के लिए ये खरीदना है, अपना काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए यू नीड टू गिफ्ट इट समथिंग, या अपने ऊपर ही खर्चा करना है. ऑलवेज वांटेड टू हैव अ बाइक, व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी और स्टार्ट पेइंग द इंस्टॉलमेंट फ्रॉम फर्स्ट सैलरी. मेरे हिसाब से फर्स्ट सैलरी उड़ाओ, सेकंड सैलरी से वेरी स्ट्रिक्टली स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नाउ मेनी पीपल विल आस्क इन्वेस्टिंग कैसे, कहाँ? वो अभी मैंने बताया रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. देयर आर टू ब्रॉड क्लास एसेट क्लासेस: फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट आर फिक्स्ड इनकम, व्हाट आर इक्विटी. सीधी सी बात है, फिक्स्ड इनकम में लो रिस्क तो लो रिटर्न, इक्विटीज में हाई रिस्क तो हाई रिटर्न, राइट? अब आपके अकॉर्डिंग आप कितना, अभी ओके लेट मी गिव लाइफ केसेस. There is a friend of mine who was investing from 2015. वो सब कुछ अच्छे से फॉलो करके 2015-16 से अच्छे से फॉलो करके बेचारा SIP करता था. मैंने उसको बहुत बोला था कि स्टार्ट डूइंग योर SIP. He was my junior in my company and वो SIP कर रहा था. All of a sudden May 2000 और March 2020 came, उसका 2015 का SIP भी नेगेटिव में चला गया. तो इस तरह के वैभव क्या दिलवा दिया तुमने, सब कुछ तो नेगेटिव हो गया है. उसके बाद आज 18 months हो गया है, he has never spoken with me कि तुमने कुछ गलत दिलवाया, because the way the market has rebounded, you have seen like right last 18 months में कहां से कहां मार्केट पहुंच गया. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी है. एक महीने में मार्केट 50% क्रैश कर रहा है और फिर उसके बाद 18 महीने में 300% ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी इन काइंड ऑफ स्टॉक प्राइसेस, रिटर्न्स एंड ऑल. डू यू हैव दैट करेज, डू यू हैव दैट थिंग टू होल्ड दैट कि ठीक है आज नीचे जा रहा है, ऊपर आएगा. इट्स नॉट लाइक कि मेरा सब खत्म हो गया, राइट? जिसने इस चीज को ओवरकम किया था मार्च 2020 में, they are smiling, happy, very happy. They actually invested more in March 2020, right? Now the question obviously is that 18,500 is nifty, whether we should sell that or not, but that's a kind of a separate topic. My personal point again is that a small correction might come, maybe nifty goes to 16,000 17,000, but वहां पे आपको ऐड करना है, वहां पे आपको पैनिक में आके सेल नहीं करना है, बिकॉज अगले 10 साल मेरे हिसाब से अगले 10 साल इंडिया के,
यू नीड टू बी, वो आया था ना स्कैम 1992 में डायलॉग, इंडिया पे लगा दो, उस समय जो भी सिनेरियो होगा, बट आज की डेट में तो सही में यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इनटू इंडियन इक्विटीज फॉर श्योर. Okay, so let me concentrate on this episode on equity investments, right? Now, how will a retail investor, and who is a retail investor who is not in HNI? So HNI ke liye, the net worth is somewhere around, he should have 5 crores, 10 crores and all. And then there are various products which are focused only on HNIs, but let's not talk about that. Let's talk about people like you and me. I'm assuming most of you are retail investors. Sorry if you're not. But जिनका investment size 50,000 to 1 lakh to 2 lakh ho per month, these will be, kind of, I would say that what are the options for you guys to invest into equities. एक तो हो गया डायरेक्ट स्टॉक्स. तो पिछले 1.5 years में जिसने भी कोई भी डायरेक्ट स्टॉक उठा लिया है, सबने पैसा बनाया. बट दिस इज नॉट द नॉर्म, ऐसा नहीं होता है, राइट? If you have been looking at the markets for like past pre-COVID, मार्केट कंसोलिडेट करते, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे. अभी एक डायरेक्शन में चल रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट. ये एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा. लास्ट वीक 4 days मार्केट क्रैश्ड, राइट? मार्केट क्रैश तो नहीं बोलेंगे, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप वेंट डाउन बाय अबाउट 8 to 9%. बेसिकली पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग हु हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी रिसेंटली. पिछले 1.5 साल में जिसने शुरू किया है ना, उनको लगा रही ये तो 4 दिन मार्केट गिर रहा है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं लाइफ में. But yes, these are very, very normal kind of a things. So when you are investing in a direct stock, अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आपके पास स्किल है टू पिक अप दैट स्टॉक, आप उसका एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस अपने हिसाब से टाइम कर सकते हो, देन आपको कुछ, आप सॉर्टेड हो लाइफ में, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं. बट नॉट मेनी पीपल हैव, किसी के पास स्किल हो सकता है, डिग्रीज एंड नॉलेज है, सब है, बट टाइम नहीं है, बिकॉज जॉब कहीं और चल रही है एंड मोस्ट मार्केट इज ओपन फॉर 9:15 to 3:30. बेसिकली सबका जॉब टाइम वही होता है. सो आपके पास स्किल है बट टाइम नहीं है, देन आपको जरूरत पड़ेगी किसी और के हेल्प की. ठीक, अगर आपके पास टाइम ही टाइम है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ काम ही नहीं होता है, बट देन आपको आता नहीं है करना, तो रादर देन गैम्बलिंग एंड किसी और की टिप्स पे काम करने से तो अच्छा है कि किसी प्रोफेशनल के हाथ में पैसा दो. आज तक क्या होता था, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट प्रोफेशनल, देन इट यूज्ड टू बी द अल्टरनेटिव वाज म्यूचुअल फंड्स, कि सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते थे, व्हिच इज वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट. आई एम सेइंग दैट म्यूचुअल फंड्स आर नॉट ग्रेट, बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स. That drawbacks can be discussed in an episode 2 or 3, that what are the drawbacks of mutual fund and why you should look beyond them. I'm not saying replace them, but look beyond them. Then comes the third alternative, which we have currently brought for you guys, is called WealthBasket. Now, most of you would be recognizing this scene as well, Squid Games, right? One of the most popular globally. It had become last month. So what are WealthBasket? इसको WealthBasket का टिकट मिल गया, देखो कितना खुश हो गया. खुश तो नहीं हो गया, टेंशन में आ गया. बट व्हाट आर वेल्थ बास्केट्स? वेल्थ बास्केट्स आर जनरली क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज मेड बाय सम सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स. नाउ सेबी ने कुछ लोगों को ये बोला कि आप एग्जाम्स दो, आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स. उसके बाद आपको लाइसेंस देता है सेबी. So you should be very sure that if someone is managing your money who is a SEBI registered professional, he knows his game, right? उसके पास टाइम भी है, उसके पास रिसर्च कैपेबिलिटीज भी है, बिकॉज उसने पूरा टीम बैठा रखा है पीछे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज एबल टू kind of exit and entry timing in particular stock. He can very well be taking out his of his own. अब क्या होता है कि अब मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बियॉन्ड देखो तो देयर आर वेरी वेरी देयर आर सम प्रोफेशनल्स इन इंडिया हु आर एक्चुअली डूइंग दिस. आई कैन से मच बेटर देन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आल्सो, which is, I'm not saying कि mutual fund managers are not doing the right thing, but then there are certain constraints in which they work as well. फिलहाल क्या है कि in the point of this SEBI registered professionals, they are curating their portfolios with as low as 10 stocks, 15 stocks in the portfolio. Mutual fund में कभी-कभी 50-60 stocks होते हैं, तो आपको diversification कुछ ज्यादा ही over diversified हो जाता है. 10 to 15 stocks is a very very good thing. एंड यहाँ पे आपको ओनरशिप मिल रहा है पूरा, मतलब द स्टॉक्स आर डायरेक्टली, इफ यू आर बाइंग अ वेल्थ बास्केट. अभी वेल्थ बास्केट कैसे बाय करना है, क्या करना है, दैट आई विल टेल यू. बट इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन वेल्थ बास्केट ऑन वन पर्टिकुलर थीम और आइडिया और स्ट्रेटेजी, इफ यू हैव द नॉलेज, मैंने बोला था ना, अगर आपके स्किल है बट टाइम नहीं है, तो भी आप इसको देख सकते हैं कि आप स्किल के अकॉर्डिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट ओके इन द नेक्स्ट 3 years above आई थिंक IT sector will do good, or in the next 3 years maybe banking and financial services will do good. तो आप पर्टिकुलर थीम का वेल्थ बास्केट ले लो. वो वेल्थ बास्केट में देयर आर सर्टेन स्टॉक्स which the fund which the SEBI registered professional has actually put up with certain kind of ratio or percentage weightage,
कि इसका 12% होना चाहिए, इसका 8% होना चाहिए, वो पूरा एक एल्गो से आ रहा है, एल्गो से ड्राइव हो रहा है, रिसर्च से ड्राइव हो रहा है। इफ यू आर सॉर्टेड ओवर देयर, वो अपने आप ही आपको परसेंटेज, वो सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर वो देता रहेगा, एंड you will keep getting a nudge on your email and SMS that okay, your wealth basket manager has actually asked you to do some rebalancing. अभी क्या होता है, इसका कंसेप्ट सीधा सा है। आप अगर कोई स्टॉक लेके बैठ जाते हो तो एक तो थ्योरी हो गई कि बाय एंड होल्ड, बस लेके बैठ जाओ एंड 20-30 साल बाद देखो, वो पोर्टफोलियो के लिए भी जरूरी है। बट देन देयर इज आल्सो एन काइंड ऑफ एक पोर्टफोलियो का पोर्शन होना चाहिए वेयर यू आर ट्राइंग टू अर्न अ लिटिल हायर अल्फा इन द शॉर्ट टर्म। उसमें क्या होगा कि आपने आज लिया, मोमेंटम है, यहाँ पे लेके यहाँ पे बेच दिया, फिर दूसरा स्टॉक लिया, यहाँ पे बेच दिया। हर टाइम पे कोई ना कोई स्टॉक्स का मोमेंटम तेज होता है, इवन इफ द मार्केट इज फॉलोइंग। मार्च 2020 में मार्केट वाज फॉलोइंग, अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स फार्मा वाज द वन ऑफ द क्विकेस्ट टू पिक अप, राइट? तो ऐसा नहीं है कि there are all sectors which will just go down. So this fund manager is actually kind of timing all these things for you, and this is where you earn more and more alpha on your investments. For the people who are actually starting, what I would suggest is these are the two wealth baskets you can find on the Paytm money app. One is gold, debt and equity. Now इसमें क्या है, इसमें तीनों एसेट क्लासेस मिलेंगे आपको। अभी तक हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे यू विल गेट ऑल द थ्री एसेट क्लासेस इन सर्टेन प्रपोर्शन। अभी वो प्रपोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी हो सकता है कि 100% इक्विटी में डाल दे, 0 गोल्ड और डेट में रखें, राइट? अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो यू विल प्रेफर दैट, बट अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो यू विल से कि यार इक्विटी तो क्रैश कर रहा है, इससे अच्छा होता है कि मैंने अपना पैसा गोल्ड या फिर डेट में डाल दिया होता। बट कितना किस में डालना है, these are the extreme scenarios like 0 100%, but there will be like कभी 20% गोल्ड में हो, 30% डेट में, 50% इक्विटी में। who is going to calculate that percent allocation? This is the algo which this fund manager, this SEBI registered professional actually run through their own system कि किस टाइम पे कितना वेटेज किस एसेट क्लासेस में होना चाहिए। एंड अगर आप इसमें एक एसआईपी के जैसे या फिर आप इसको ऐड करते रहोगे लमसम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अ स्टेबल और काइंड ऑफ वेरी वेरी आप धीरे धीरे उसको एसेट एलोकेशन के तरह से देखो दैट यू कैन बिल्ड अप योर वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको बेचने की कभी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो फंड मैनेजर काम कर रहा है, बस आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे के उस पे बेसिस पे चालू रखो। अगर आप खुद से कर रहे हो तो देन यू आर ऑलवेज कंफ्यूज एज टू ठीक है, मैंने अपने मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मैंने आज 7 लाख इक्विटी में डाला है विच इज 70%, एंड डेट में 20% डाला है 2 लाख, एंड गोल्ड में 1 लाख। अब मार्केट ऊपर भाग गया, इक्विटी बन गया 8 लाख, बाकी आपका वेटेज कम हो गए, वैल्यू बढ़ेगी बट वेटेज कम हो जाएगा। बट दिस इज वेयर यू नीड टू हैव दैट ट्रिगर दैट वी नीड टू सेल मे बी सम इक्विटीज एंड गेट देम बैक इन प्रोपोर्शन, which is what is done by this fund manager as at a one click of a button, right? The second which I would suggest is stable momentum wealth basket. Now this is very very interesting and my favorite. So होता क्या है कि इसमें सिर्फ 10 स्टॉक्स होते हैं, एंड वो 10 स्टॉक्स कौन से हैं वो इवन द पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस फंड, द सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, उसको भी नहीं पता। क्यों? बिकॉज उसने काफी मेहनत करके विद लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स he has gone back, tested the strategy over a long period, and then he has come up with certain scenarios जहां पे वो ऑटोमेटिकली 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में आएंगे जिनका कुछ पॉइंट पे लाइक मोमेंटम हो गया, फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, वो सारे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। व्हेन ही सीज कि थोड़ा मोमेंटम डाउन हो गया है, अभी हो गया, इसका रन अप हो गया, इसको सेल करो, मे बी दूसरा स्टॉक यू कैन एंटर इन। So this is going to be kind of every month का rebalancing है। अगर आज आपने 26 अक्टूबर को डाला है तो 26 नवंबर को you will get some more stocks, कुछ स्टॉक आउट होंगे, कुछ स्टॉक आएंगे। Over the long period of time you will see that how great value you are creating in equities using this stable momentum wealth basket. So this is again a pretty interesting phenomena. I mean, someone who has already invested in would be actually having some feedback, positive, negative, whatever, but it's a very short period of time in the last 1.5 months, but definitely over a period of time this is something which has earned a great alpha historically, and I assume it will continue to do so. अभी मैंने पूरा बोल तो दिया what is wealth basket, but again if there is any point left I can cover. So wealth basket is a research backed backtest basket of stocks and ETFs. तो सिर्फ स्टॉक्स नहीं होते हैं, किसी किसी में ETFs भी हैं। तो बेसिकली गोल्ड, इक्विटी, डेट में स्टॉक्स नहीं है, जनरली वो ETFs के थ्रू प्ले कर रहे हैं, बिकॉज द फोकस ओवर हियर इज द परसेंटेज एलोकेशन rather than the stocks, right? अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाना है तो you have the stable momentum for you, which can help you build a short term or a long term portfolio. So these both I would say are the long term portfolio kind of thing, but even there are few baskets. If you go to the app you will see कि कुछ
सेक्टर स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक बास्केट्स हैं विच कैन वर्क इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब उसका मोमेंटम खत्म हो जाए, आपको लगे कि अभी फार्मा नहीं चल रहा है, राइट, बहुत टाइम से, बट फार्मा 2020 में स्टार्टिंग में बहुत चला था आफ्टर क्रैश. फिर आईटी आ गया था, अभी आईटी भी थोड़ा चल रहा है. अभी क्या चल रहा है, अभी थोड़े दिन पहले मेटल एंड माइनिंग वाज रनिंग, फिर बीच में पावर स्टार्टेड रनिंग. सो हर सेक्टर का एक टाइम है. इफ यू कैन टाइम दिस, इफ यू कैन नो दैट ओके दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेक्टर व्हिच इज रनिंग नाउ. रियल एस्टेट का बात करते हैं या किसी ट्रांसपोर्टेशन, देयर आर मेनी सेक्टर्स जिसमें आपको म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली उस सेक्टर के नहीं मिलेंगे. But at WealthDesk, what WealthBaskets, what we can do is we can curate specific themed portfolios for you. This is one of the greatest advantage. आपको लग रहा है थीम खत्म हो गया, आइडिया खत्म हो गया, then you can probably exit the basket at a whole, right? Closely monitored by experts, suitable for every need, research-driven advice, transparency and control. Last one थोड़ा सा मैं highlight करूँगा. Transparency, because mutual funds में, if I ask you that okay, you tell me which is the mutual fund you have the highest investment into, you will say कि ठीक है मेरा XYZ mutual fund में highest investment है. Then I'll ask you, tell me top 3 stocks in your mutual fund. आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी इज लो. ट्रांसपेरेंसी है, महीने में एक बार अपडेट करते हैं, बट किसको पढ़िए जाके देखे कि किस फंड मैनेजर ने क्या डाला. यू माइट थिंक कि मुझे जरूरत नहीं है जानने की, बट इट्स योर मनी यार, इतना तो पता रखो ना कि कहाँ पे कौन कहाँ पे पैसा डाल रहा है. इसमें क्या होता है वेल्थ बास्केट्स में, दैट ऑल द स्टॉक्स इन द अंडरलाइंग एक्चुअली कम एंड रिसाइड इन योर डीमैट. तो आप जब भी अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे पेटीएम मनी का, आपको वो सारे स्टॉक्स दिखेंगे. तो यू नो, अच्छा अभी मेरा इन्फोसिस में इतने स्टॉक्स लेके डाला है, या फिर टीसीएस में इतने, तो यू नो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, एंड व्हाट इज द फंड मैनेजर thinking also. And control basically whenever you want to exit in one button, no extra cost and all, brokerage के अलावा कुछ cost नहीं लगता है. Once you are in the subscription plan, there are 3 subscription, in fact 2 subscription plans. एक आपके कुछ free wealth baskets है, right, where you can go out and you can try on your own that what is the concept behind it. No charges are being levied over here. Then if you like it, or even if you think that you need to have some more focused wealth baskets, then there is a core plan and then there is a pro plan. So if you go to that, you'll see all the wealth baskets listed over there. There are total 13 of them currently, and we are in the process of adding more and more, most likely like every fortnight or every week or something like that. Finally, the last slide. अभी ये भी सबको, आई होप ये सबको पता हो ये किस मिनी सीरीज नेटफ्लिक्स सीरीज का इमेज है. So मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि whenever I am speaking with someone and explaining some concept, I use minimum financial jargon, because मुझे ऐसे ऐसे फीडबैक मिलते हैं, अजीब से चित्र घूमते रहते हैं दिमाग में. So अजीब से चित्र घूमने की जरूरत नहीं है. Consider your wealth as equal as health. हेल्थ के लिए तो सब लोगों को टेंशन रहती है ना, काइंड ऑफ फिटनेस के लिए भी, और कुछ भी बीमारी होती है तो यू गो टू रश टू अ डॉक्टर, बिकॉज बिना हेल्थ के आप काम ही नहीं कर सकते, फंक्शन ही नहीं कर सकते हो. The day you start giving wealth also that importance, no, the only difference is that health का ना इफेक्ट इमिनेंट आते हैं, इमीडिएटली आते हैं, इसलिए आपको लगता है ये जरूरी है कंट्रोल करना. वेल्थ के इफेक्ट ओवर द लॉन्ग टर्म आते हैं, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वेल्थ इज, फॉर मी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. वेयर यू गो टू अ डॉक्टर फॉर हेल्थ पर्पसेस, you need to go to an advisor or a fund manager or a SEBI registered professional who knows about the stuff he is talking about, right? आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेते हो, घर पे बैठ के कर लो, पता चलेगा क्या रिस्क है. Similarly, it's the case with the financial investment journey as well. So just to summarize in the last line, you start your investment journey, if you have not started yet, you start by taking those emergency fund, health insurance, life insurance, very important, even before you actually dive into your equities and fixed income. And once you are sorted over there, think about how much percentage you need to keep into fixed income, how much into equity, how much into gold. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो go and buy, subscribe to this gold debt equity wealth basket. Fund manager will take care. धीरे धीरे you will learn, you will, there are a lot of material today available online. You will also realize that okay, कब कौन तेजी से भागता है, कब कौन रुकता है. If you the once kind of once you have that understanding, maybe then you can do it a little bit of percentage allocation by yourself. But till then, this is one of the best which probably you can look to invest into. And then obviously, if you want an exposure to stable equities, stable momentum is what you should look into. So here I will stop, and I will actually look at some questions if they have come. Just let me see. Okay. So I'll okay quickly kind of voice out the questions which I have been receiving over the time I have been speaking.
and quickly answer all of the questions. Many of the questions I can look, I've already answered them. So what is Wealth Basket? Wealth Basket I've explained. Could you tell what is the maximum risk can be there in any investment? I mean, risk percentage. Okay, so percentage, nobody can. Percentage is basically the standard deviation, right? If you go to these Wealth Baskets, then probably, kind of there are fact sheets available where historically there are things like standard deviation, maximum drawdown, and all those things which are given to you. Basically, uska interpretation hota hai. Abhi we can cover this all the interpretations for all these metrics in one of the sessions. बट सीधी सी बात है, जितना कम आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिख रहा है या मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिख रहा है, उतना वो कम रिस्की है, राइट? सो दिस नंबर शुड बी लो. So this is how you actually gauge the maximum risk. और maximum risk कुछ नहीं होता है. There's no cap anybody can put in. But you can compare different asset classes and see कि इसका risk ना historically हमेशा सबसे कम ही रहा है the percentage basis पे. So you know that is safer. If you talk about the fixed income asset classes, उनका तो maximum risk ज़्यादा कुछ होता है. If you government security तो risk free, almost risk free है वो, right? But equity में आओगे तो आपको risk लेना पड़ेगा. Can we modified wealth basket? As of now, no, you can't modify the wealth basket क्योंकि अभी फंड में सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल ने कुछ स्टॉक्स डाले हैं, तो you need to trust him. But we'll see if you can. But you can change some, kind of weightages. I mean, you have that ability to change weightages. If you think that you may know better, then probably you can, kind of make some stock lower weightage or some higher weightage. But I would suggest stick to what your fund the RA research and the SEBI registered professional is saying, and just follow him, right? But if you want to change, yes, you can modify. Okay. Are you looking to add new wealth baskets? Yes. Stick around. Very soon we are going to have a very, very two great wealth baskets for you. And I am very sure and I'm very excited. Diwali is coming. If you get a hint, some wealth baskets are coming on certain themes which currently we do not have. And I'm sure it would be great. I don't want to involve in active investing and I don't have enough knowledge. Should I consider wealth baskets? Yes, actually, this is what I've been, talking about. When you do not have time and skill, then give your money to some professional to handle. And this is what happens in wealth baskets. I'm a student and I don't need money as my parents fulfill my expenses. So should I invest as a lump sum or SIP? Okay, great question. My point is, ऑलवेज ट्राई टू स्टैगर योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट. इक्विटी को एक साथ में मत डालो. अभी 18,500 मार्केट है, अभी डाल दिया और मार्केट वापस 15,000 चला गया, दैट 15,000 to 18,500 रिकवरी में टाइम लग जाएगा. तब तक होगा क्या, तुम लोग का पूरा विश्वास उठ जाएगा मार्केट इक्विटीज से. यू विल से कि कहाँ पैसा डाल दिया. ऑलवेज स्टैगर सो दैट यू कैन एवरेज आउट योर एंट्री प्राइसेस, राइट? सो एसआईपी लमसम कर सकते हो, बट देन लमसम कीप ऑन रिपीट. आई मीन, what is lump sum? If you keep on repeating it, it becomes an SIP only, right? So SIP is on a particular fixed date you are doing, but if you have certain understanding कि आज market dip हो गया, चलो थोड़ा और डाल देते, you can even do that, right? Okay, so what is wealth basket? I'm using Paytm money for MF investments. So Shubhat, I answered this, right? I hope you got a clarity by then. So for Paytm money, if you are using mutual funds for Paytm money, you can also look for that wealth basket kind of card over there in the app, and you go inside and then you'll figure out most of the things and can now reconnect, can connect as to what I said in the last 20 minutes. Okay, do the fund managers do reverse trade in falling market? Reverse trade, I am assuming you want to say that short selling. Short selling in India is actually not allowed beyond a single day. You can only short sell intraday, right? Which is you are calling reverse trade is what I'm assuming. So in that case, the traders generally do short selling, but these are long-term investment vehicles. These are for your wealth creation opportunities, not like कि आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा शाम को बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है. So no, they do not do reverse trade in the falling market. But then, as I told you, falling market maybe there will be a section of stocks which will keep doing good, right? Which will do good. So this is what the algo actually picks कि कौन सा stock अच्छा कर रहा है, वो आपके basket में most likely आ जाएंगे. Okay. Is it good for long-term wealth creation? I just said that. Yes, it is good for long-term wealth creation only. Short-term तो opportunity सब ढूंढते हैं because वो behavioral bias है ना हम लोगों की भी. आज हमारा 20% एक महीने में बन गया, चलो exit कर देते हैं. ये short-term approach हो गया, which is I think as of now, if I say this is wrong, then people will say क्या बकवास कर रहे हो Vaibhav. But over the long period, I mean, just keep on investing in the form of SIPs or kind of stagger your investment, and you will realize. ये
मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है गाइस, इट्स नॉट दैट मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ लाइक लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम एंड एल्सवेयर टुडे. आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन मार्केट सिंस 2010 एंड मैंने जो वहां पे जो एसआईपी चालू की थी ना, वो कभी भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव जस्ट गिवन मी मल्टीपल. सी आई स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट विद जस्ट 2000 रुपीज अ मंथ बैक इन 2010 एंड 11. जस्ट 2000 बिकॉज सैलरी कम था उस समय, राइट. बट इन्वेस्टमेंट चालू किया था मैंने वो 2000 में. जो I invested for a period of 1 year before I went for my MBA. तो वो जो 24-25 हजार रुपए जो थे ना, that has amounted to over 1.5 lakhs today. वो 6 times हो गया है. अगर आप उसका ईयरली एवरेज निकालोगे तो 15-16% ही आएगा, which is what I say that in the long run you can expect around this kind of a percentage return from your equity in the long run, right? So generally it's for long term only. Just like mutual fund, wealth baskets are for long term investment. The only difference is that sometimes you might think Paytm money app खोला कि चलो ये स्टॉक बेच देते हैं. ऐसा मत करना, इसको रखो अपने पास and trust the process. Okay. The next question is I'm getting questions so fast that questions ऊपर नीचे हो रहे हैं. Is it necessary to keep doing investment every month? Not necessary. SIP कर रहे हो तो obviously वो SIP miss हो जाएगा. तो I would suggest अगर if you have selected SIP, I think SIP we are going to soon have on the app SIP feature. But तब तक आप lump sum करते रहो, but आप add करते रहो. Compulsory नहीं है. It's not like compulsorily you have to do it. Where can I find balancing option in Paytm? Point बैलेंसिंग ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, बट होता क्या है कि इफ यू हैव इन्वेस्टेड ऑन 26 अक्टूबर, आपको 26 नवंबर को ही दिखेगा. वहां आपको सामने सामने दिख जाएगा, बट एक महीने से पहले नहीं दिखेगा. नहीं तो आप बैलेंस ही करते रह जाओगे तो वो पूरा चर्निंग में सारा एकदम मजा खराब हो जाएगा, राइट. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट द फंड एडवाइज, द प्रोफेशनल ओनली टेक दिस कॉल फॉर यू. आप बस उसको जाके एग्जीक्यूट कर दो, ओके दबा दो कि यस आई अग्री फॉर दिस काइंड ऑफ सेलिंग एंड बाइंग. कैन आई डू जस्ट वन इन्वेस्टमेंट एज पर एनी प्लान एंड मॉनिटर इट? यस यू कैन. जब आप एक प्लान लो, कोर या प्रो ले लो, कुछ भी ले लो, एंड उसमें आप सिर्फ एक वेल्थ बास्केट में आप इन्वेस्ट कर दो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट काइंड ऑफ फोकस ऑन वन वेल्थ बास्केट एंड लुक एट हाउ इट ग्रोज. Is SIP possible in WealthBasket? I just answered. Will it use the same trading account as my Paytm money trading account? Yes. तो आपका लेजर में बैलेंस होना चाहिए. It's the same account because you are buying equities. यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप खुद जाके जब लेते हो तो एक एक इक्विटी खुद से ले रहे हो. यहाँ पे आपको पूरा एक बंच एक साथ मिल जाएगा, which is that 10 stocks or 12 stocks portfolio has been recommended by a professional. That's the only difference. Otherwise it's almost the same thing. आपका वही पैसा यूज हो रहा है और आपका उधर ही सारे स्टॉक्स डीमैट अकाउंट में जा रहे हैं. Is WealthBasket similar to small case in the way it is structured? So I can say yes, but there are a lot of differences. I mean, here you are getting a subscription plan. It's like Netflix. आपने Netflix का अकाउंट लिया है, आपको वो मिलता है ना, आपको 2 स्क्रीन चाहिए, 4 स्क्रीन चाहिए, कितना चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए. दिस इज सेम थिंग. आप एक सब्सक्रिप्शन प्लान लो, उसके अंदर एक बार आपने प्लान ले लिया, फिर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करो. आपने आज लिया गया, मुझे पसंद नहीं आ रहा, अगले हफ्ते बेच दिया. आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट इवेंचुअली उसके अलावा कुछ और ले लिया इतने दिन. तो ये सब चीजें चलती हैं. सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट. बट अगेन द पॉइंट इज यस, इट इज आल्सो क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज एंड अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन हु इज मैनेजिंग योर फंड्स. ऑनेस्टली गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैसा मैनेज कौन कर रहा है. यू नीड टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज मैनेजिंग योर मनी. दैट्स इट. वहीं पे बक स्टॉप्स ओवर देयर, राइट. When is WealthBasket coming to iOS? So I belong to Wealthdesk, but Paytm guys will be better to tell this. I'll leave this question to them. Can I 500 SIP start in a basket? So I think minimum, I don't remember exactly, but I think the minimum is 1000. But I'll check if 500 SIP also you can start, because if you want to see 500 में क्या है ना, ETFs आएंगे, stocks तो आएंगे नहीं, right? But I think that is possible. If it is not there, I'll see if the fund manager, the professional can start with 500 also. Yeah, someone answered yes, you can start 500. Perfect, thanks. Okay, how often it is rebalanced? 1 or 2 twice a month? I have no 1 or 2 times a month. No, it's always 1 time a month. There is just one wealth basket in core in the pro plan, which is like pure equity plan, which is kind of rebalanced quarterly. Otherwise all the I think 7 or 8 wealth baskets into equities are rebalanced monthly. Sir, I have no idea about wealth basket. Can you explain in brief? I just explained you for the past 30 minutes, right? So this is what it is. When should you withdraw money from basket?
so that it is profitable. See, if you can time your entry and exit, you can withdraw when you think that okay, it is time that market अभी ऊपर जाना बंद हो गया. Now if you ask me that कब होगा ऐसा मार्केट ऊपर जाना बंद, वो तो ओनली गॉड नोस, राइट. कोई नहीं जानता कहाँ से मार्केट, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग ना 12,000 के लेवल से कि मार्केट करेक्ट होगा, अब करेक्ट होगा, वो 18,000 के ऊपर चला गया. सो यू थिंक दैट ओके मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया, अब मार्केट से मुझे पैसा नहीं मिलेगा, आप विड्रॉ कर लो. बट माय ओपिनियन वुड बी दैट स्टे इन्वेस्टेड, नो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आप यहाँ से 10-15% अगर CAGR लगाते भी हो, तो stay invested in Indian equities at least till 2030 is what I say. It's what I have been saying for past 5 years also. 2015-16 से मैं यही बोल रहा हूँ कि 2030 तक का टाइम इंडिया का, you need to be invested into India. अगर आप कह रहे हो 2020 में मार्केट कितना क्रैश किया था, तो कौन सा मार्केट क्रैश नहीं किया था, सारे किए थे ना. इंडिया हैज डन द बेस्ट आई थिंक ग्लोबली. आई डोंट हैव द नंबर्स बट आई थिंक इट्स द बेस्ट. Okay, what is the minimum amount to invest in lump sum? I'm using iOS. So iOS is not there, as I said. Lump sum minimum amount is basically dependent upon WealthBasket to WealthBasket. किसी में 10,000 है, किसी में 1,000 है, किसी में 500 है. आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरा ऐप पे मिल जाएगा. Can we do a systematic transfer plan in Paytm? I don't think so. अभी systematic अभी SIP feature launch होगा, उसके बाद we will probably look to launch STP feature as well. But till first priority obviously is going to be SIP. Is there an SIP नहीं होगा तो STP कैसे करोगे basically? तो STP is nothing but SIP plus SWP. ना, SWP is systematic withdrawal plan. So is there any exit load or is there any minimum time to keep invested? नहीं, मैंने बोला ना, आप आज लेके शाम को बेच दो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, which I will not suggest, but you can do that, and there is no exit load. Once you are into the plan, the only charges which you are going to incur is your transaction execution charges, is like brokerage and all. Paytm तो brokerage भी नहीं है, तो वो STT stamp duty वाले ही charges लगेंगे और कोई charges नहीं लगेगा. So आप कितने unlimited transactions करो free of cost, apart from the transaction costs. Which wealth basket a beginner use from the core plan? Core plan के लिए stable momentum would be my recommendation under the core plan. You can have your own choices, but I would recommend stable momentum in equities if the focus is 100% equities. If the focus is other asset classes also, you can look at evergreen wealth baskets. दो evergreen wealth baskets है, एक moderate के अंदर आती है, conservative के अंदर आती है. If you can take a little bit of risk, then go for evergreen multi-asset moderate wealth basket. It's also a good wealth basket for the beginner. Equity in wealth basket only Indian companies or US companies as well? Very good question. So there are certain wealth baskets which have kind of ETFs from some mutual, some kind of manufacturers, which are like Motilal banata hai ek SOF fund of fund, and there are other kind of AMCs which have also come up with ETFs which are focusing on Nasdaq 100 or S&P 500. वो सब आपको मिलेंगे basket में. But if you are asking for a specific stock, वो जो पराग पारिक फ्लेक्सी फंड कैप फंड डालते हैं ना, स्पेसिफिक स्टॉक, वो सब नहीं है अभी इसमें. सो दैट इज नॉट देयर. सो ओनली इंडियन एक्विटीज, एंड इफ यू वांट एन एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एक्विटीज, देन गो फॉर सर्टेन बास्केट व्हिच हैव दैट ETFs. सो आपको वो ETFs मिलेंगे उसमें. यू विल हैव इन एवरग्रीन काइंड ऑफ मल्टी एसेट, कंजर्वेटिव एज वेल एज आई थिंक मॉडरेट, इन सब में आपको मिल जाएगा. सो वंस यू बाय द कोर प्लान सब्सक्रिप्शन, यू कैन सी ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर ऑल द बास्केट्स. यू इन्वेस्ट इनटू दैट. Okay. Which wealth basket do you recommend to invest 1 lakh? Now again, the point is, if you are investing 1 lakh, you should kind of divide it into, let's say, 2 baskets. Do 50,000 each. And these are all my suggestions. I mean, see, you don't need to follow them. I am not a SEBI registered professional or an advisor, but I can just say, just like, kind of from my experience, that you should divide it between a couple of different, kind of types of investment. So you can do a quick 50K in pure equity basket, which might be stable momentum, or if you have a certain understanding that अगले 5 साल में ये sector अच्छा जाने वाला है, let's say IT sector, then Digital India is there. If you think pharma अच्छा जाएगा, then pharma basket is there, and the remaining can be invested into a core this equity, debt, gold equity वाला basket जो था, या फिर evergreen multi asset, conservative or moderate. So you can do 50-50 or a 33-33 kind of these kind of things. Is it only for Paytm Money users? Yes, as of now, it is only for Paytm Money users. Triggered how to work, मुझे समझ में नहीं आया question. Core plan subscription price.
Core plan subscription price, you can look in the app. It is kind of, and we are running a 40% discount if you if you take a plan for a 6 month or a 12 month. Why is this discount for 6 month 12 month? Because we want to inculcate a practice of long term investment. अभी कोई एक महीने का लेगा, then he might not kind of renew it, and then आपका क्या फायदा हुआ लेने का? I mean, right? If you want to try it out with the free wealth baskets. But once you are comfortable, just go for a 6 to 12 month core plan or a pro plan, depending upon what your need is, and you get a 40% discount as of now. This is not permanent. As of now, we are running a heavy discount on that. I think discount के बाद आपका core plan for 12 months comes around $1,000. So it is very very cheap. So you see, if you are going to invest even a 20,000 per month के हिसाब से 2.5 लाख रुपए आपने invest किया है, तो you only pay $1,000 for that, right? Can we create your own basket? Not as of now. In the future, maybe. When we withdraw time of IPO, any changes is there? Sorry, I did not get that question. If that can be reworded and sent again. What is the difference for basket SIP? Which is better? Please tell me. Wealth basket is better. Why are you asking me? What are the charges for Pro Wealth Basket? Pro Wealth Basket 12 month. I think you are getting after discount at somewhere around $1,900, right? So Pro plan you will have 13 Wealth Baskets over there. Correct. रीबैलेंसिंग अपडेट कब मिलेगा? जैसे ही आपका 1 महीना खत्म हो जाएगा, आपको रीबैलेंसिंग अपडेट इसके 1 दिन पहले आ जाएगा दैट रीबैलेंसिंग इज कमिंग, डेट इज कमिंग. तो आपने अगर 26 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया, आज क्या डेट है? आज 27 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया अगर आपने, तो देन 27 नवंबर को आपका रीबैलेंसिंग अपडेट आएगा इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ वेल्थ बास्केट व्हिच इज अ मंथली रीबैलेंसिंग अपडेट. इफ इट इज अ क्वार्टरली रीबैलेंसिंग अपडेट, तो यही आपको 27 जनवरी को मिलेगा. Okay, WebView for WealthBasket, I don't think so. Abhi it is only for app. The Paytm team might be working on the WebView as well. Very soon it will be launched. So I have been able to answer all the questions. Few questions have been repeated, like iOS kab aayega. So iOS, SIP feature, WebView and all. Paytm Money team is looking into it, working at a very very fast pace, and will be there very soon. I know a lot of Apple users are actually kind of waiting for this, and we are very eager to have this feature for them as well. So very soon you will hear about that. If there are no further questions, then okay, great comment. Thanks. Ask Paytm Money to add option for nominee name. I think that is done on the when you open the Demat account. I mean, that's not related to Wealthdesk or WealthBasket anyways. So that should be done by the Paytm Money team. So guys, I think that we come to the okay, last question. Can we know who will be managing the wealth basket? Yes, the entire detail is given in the inside the app. You get convinced about the person, and then only you invest in. I can assure you, I know the person for a very long time, and he has a 15 to 20 years of experience in creating these portfolios and kind of total corporate experience, and have been doing this for past few years now. Has worked at variety of great companies. The company name is Quantec Capital, and the fund manager name is Mr. Sujit Modi. You know about him, you Google him out, LinkedIn pe check karo. If you feel that he's a good person who can manage your money, and his model is good basically. Now, the great thing about these wealth baskets which are currently on the Paytm Money is that behavioral bias of the fund manager is not there. ऐसा नहीं है कि अरे मुझे नहीं बेचना, ITC तो बहुत अच्छा स्टॉक है, but ITC बढ़ नहीं रहा है, तो let me keep it because ITC तो ITC है, it's a great stock. But ultimately the point is ITC नहीं बढ़ रहा है, तो उसको क्यों रखना है अपने स्टॉक में, right? Just capture those stocks which are moving fast, no? So वो बायस जो है इस मॉडल में निकल जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल सिस्टम ड्रिवन. उसने तो सुजीत मोदी ने एक एल्गो बना दिया है, उस एल्गो के हिसाब से जो स्टॉक चल रहा है वो आएगा, जो नहीं चल रहा है वो नहीं आएगा. So just check it out who this guy is. Okay, so let me wrap this up, and I will see you next Wednesday with lot of new insights. Lot of things as to maybe some new basket might have been launched by then, or the differences between a mutual fund and a wealth basket, and how much allocation should you do in what kind of baskets. Although I've answered many questions, but let's focus the next session on that as well. So we'll want to see you next time as well, and hope to see you next time, in fact. With that, okay, tata, bye bye.